नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। मैं इस एपिसोड के साथ ही एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस वॉचडॉग। क्योंकि आजकल जो भी दुनिया में हो रहा है, इट हैज़ सम इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। इफ़ इट इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती है। सो वी हैव टू सी बिहाइंड एवरी न्यूज़ देयर इज़ अ इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। एंड वील स्टार्ट विद कश्मीर। अभी आप ये न्यूज़पेपर देखिए, फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ है अबाउट लेटेस्ट एपिसोड ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। कश्मीर जो अभी तक शांत था, सडनली इट्स इन द न्यूज़। ये अपने आप नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि जिहादी आ गए और उन्होंने शुरू कर दिया। इट नीड्स फंडिंग, एंड फंडिंग्स कम्स फ्रॉम सम बिग ग्रुप्स, इंटरनेशनल पार्टीज़ और कंट्रीज़। पिछले साल से न्यूज़ थी कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, शांति हो गई है, टूरिज़्म बढ़ रहा है, एंड इट वाज इम्पैक्टिंग दोज पीपल हु सेड कि कश्मीर कैन नॉट बिकम पीसफुल। हिंदुस्तान की सडनली रेपुटेशन बढ़ रही थी कि दे कुड हैंडल कश्मीर सिचुएशन, पर ऑब्वियसली दिस वाज नॉट पैलेटेबल टू मेनी कंट्रीज़। आतंकवाद हमेशा से एसोसिएटेड रहा है विद फंडिंग, और एनी सच सबवर्सिव एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू फंडिंग। अब आप ये देखिए कि जब अमेरिका एंड चाइना दे वर एट लॉगर हेड्स, एंड अमेरिका को चाइना से थ्रेट हो रही थी, तो अमेरिका वॉज बिफ्रेंडिंग इंडिया। वो इंडिया से दोस्ती करके और चाइना के सामने खड़ा करना चाहता था, और इसीलिए वो पाकिस्तान को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का चमचा हो गया था। और जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, तो पाकिस्तान वॉज शॉर्ट ऑफ फंड्स फॉर इवन फंडिंग द टेररिज्म। तो इट वॉज ड्यू टू दैट कि कश्मीर में शांति हो गई थी। अब पिछले साल भर से सिचुएशन चेंज हुई है। सडनली अमेरिका हैज़ रियलाइज दैट चाइना इज़ नो लॉन्गर द थ्रेट इट थॉट इट टू बी, बिकॉज चाइना का जो इकोनॉमिक बबल था, दैट इज़ बर्स्टिंग। दे ओवरप्लेड द हैंड। उन्होंने अपने खर्चे और अपना इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से किए थे कि उनके पास उतनी इनकम आती रहेगी। सो दैट इज़ वाई दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी और स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दैट इज़ बिकमिंग रिडंडेंट, बिकॉज उनके पास अर्निंग इनफ्लोज नहीं है जो पहले थे। एंड इंडिया ने भी अपने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, और भी कंट्रीज इसी तरह कर रही हैं, इसलिए चाइना इज़ अंडर प्रेशर। एंड द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट दैट दे डिड इन हाउसिंग सेक्टर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स एंड हाउसिंग, यही दो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। चाइना ने भी दे ओवर स्पेंट इन रेलवेज, रोड्स एंड ऑफ कोर्स हाउसिंग, विच इज़ ऑफ बस्टिंग। तो जब अमेरिका को ये रियलाइज़ हुआ कि इन फोर्सेबल फ्यूचर, इन नेक्स्ट 1 or 2 years, चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बी थ्रेट, तो दे हैड टू रिवाइज इंडियाज़ इम्पोर्टेंस इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स। And that is when they started putting pressure on India to behave. Because जब तक वो चाइना को importance दे रहे थे, India was getting a free run. India was not listening to America or West or anyone. अमेरिका ने कहा कि भाई तुम रशिया से तेल मत खरीदो. We went on purchasing oil. And at that time, America had to keep quiet. But when somebody like that keeps quiet, you can be sure that they are planning something. So America initially asked Canada to take on India, and Canada ने एक गैंग वॉर विक्टिम निज्जर को हीरो बना के एंड इंडिया को ब्लेम कर दिया। एंड इंडिया ऑफ कोर्स न्यू कि देयर इज नथिंग टू इट, एंड दे कुड कॉल अ स्पेड। दे रैटल्ड कैनेडा, एंड कैनेडा कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। तो वो मैटर वहीं दब गया। तो वो अमेरिका का अटेम्प्ट फेल हो गया। देन अमेरिका हैड टू गो फॉर प्लान बी, एंड प्लान बी वॉज दिस पन्नू मैटर। ना पन्नू मैटर में क्या था कि ये भी उतनी एब्सर्ड है जितना निज्जर वाला मैटर था, पर इन दिस केस अमेरिका ने ऐसी कहानी बनाई जो कि सबको मालूम है फेक है, पर ये उनकी एक तरह की दादागिरी है कि इफ़ वी आर सेइंग इट, इट इज़ ट्रू, यू हैव टू बिलीव इट। इट इज़ जस्ट कि इफ़ यू वांट टू बी फ्रेंड्स, बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। बट इंडिया इज़ नॉट लिसनिंग टू दैट ऑल्सो. So they have gone for plan C, that is to destabilize India. And now this destabilization has started
from Kashmir. It happened in Manipur, it will happen at many other places in India, we don't know. अभी और क्या क्या वो कर सकते हैं, we will have to see. But this is a clear game of America showing its displeasure. Now, what can India do in the matter? Now, India has already played now its card in the sense that they have invited France for 26 January. Even in 26 January case, America wanted to show their displeasure by first accepting the invitation, और जब वो public हो गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ पा रहे हैं. So this was one way of showing their displeasure. So India now has, I think, sorted out their priorities. If I am thinking correctly, Modi is playing the right cards. He is inviting Macron for 26 January, and in the next few months, India will play ball with Europe, because Europe is also going through a crisis, and America is not going to help Europe because America's own crisis. So Europe and India can team up to make a group which will be a third force. Then we will have Russia, China combined, and America and Europe and India. So these three forces can balance the world power. And in this case, Russia and China will support India indirectly to contain America. So this game will become a triangular. Instead of a bilateral series, it will be a triangular series, as they say in cricket. So it's going to be a very interesting game going forward. Let us see, because let's face it, nobody likes anybody else's progress. And there are no friends. Only your enemy's enemy is your only friend. मेरे विचार से बजाय दो शक्तियों के अगर दुनिया में तीन शक्तियाँ होंगी, triangle is always a more stable structure, a triangular. आपका क्या विचार है इस बारे में? ज़रूर बताएं. Anyway, thanks for listening. I'll be posting more videos on geopolitics through this new way I'm trying to think like an international interference watchdog. Because the game is all interference. Thanks for listening. Please like, share and comment. Goodbye.